फिर एक हिंदू पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की शोपियां में आतंकी गोली से मौत। नतीजे में जम्मू में पंडितों की हाय हाय और सरकार मौन। ये रियलिटी घाटी और श्रीनगर की अब नई रूटीन बात हो गई है। अलगाववादियों को लगता है पंडित को मारेंगे तो सरकार की नाक कटेगी, हिंदू लौटेंगे नहीं, बसेंगे नहीं, मोदी, शाह और मनोज सिन्हा बदनाम होंगे, पंडित रोएंगे और देश दुनिया में सब कुछ पहले जैसा समझ आएगा। ये Catch-22 की स्थिति है। पंडित सुरक्षित नहीं है, वह आतंकियों का आसान निशाना है। मगर यदि हिंदू कर्मचारियों का भी यदि श्रीनगर घाटी से बाहर तबादला हो जाए तो फिर धारा 370 को हटाने का अर्थ क्या बनेगा? क्या ये नहीं कि श्रीनगर व घाटी से हिंदू का अब नामो निशान भी मिटा? जब घाटी में सरकारी कर्मचारी की हैसियत का हिंदू भी नहीं रखा जा सकता तो फिर कौन रहेगा? इससे भी बड़ा सवाल है कि धारा 370 को हटाने हर तरह की सख्ती के बावजूद यदि पंडित और हिंदुओं में वहां रहने का हौसला नहीं तो फिर बचता क्या है? तभी हर कोई बात करता मिलेगा कि पंडित हिम्मत और दम दिखलाते हुए क्यों नहीं है। गुरु तेग बहादुर से लेकर डोगरा राज, विभाजन और आजाद भारत के नेहरू से मोदी सरकार के हर अनुभव में पंडितों का पलायन ही क्यों लिखा हुआ है? तब उस कश्मीर में रहेगा कौन जो पंडितों के पुरखों की मिट्टी है, इतिहास है, सभ्यता, संस्कृति है। इसलिए सन 22 के श्रीनगर पंडित बनाम सरकार का मसला चौंकाने वाला है। नमस्ते, मैं श्रुति व्यास। श्रीनगर के गुप्कार इलाके में कुछ हिंदू अलीट चेहरे अभी भी मिलेंगे। घर परिवार मिलेगा, करण सिंह के परिवार के लोग भी आते जाते हैं। पुराने श्रीनगर में हिंदू थानेदार मिलेंगे तो हरि पर्वत के नीचे की गलियों में इक्का दुक्का हिंदू, जबकि सिख अच्छी संख्या में दिखलाई देंगे। घाटी के सिख और पंडित की अलग अलग रियलिटी में कई दफा सवाल उठता है कि यदि सिख हिम्मत से डट कर रह सकते हैं तो कश्मीरी पंडित क्यों नहीं? हिसाब से पंडितों में हिम्मत और जोश बना होना चाहिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मनोज सिन्हा घाटी के पावर सिस्टम का पुराना ताना बाना तोड़ते हुए हैं। ऐसे में दुनिया भर में फैले हुए कश्मीरी पंडितों को अपनी पूरी ताकत के साथ श्रीनगर में बैठना चाहिए। अनंतनाग, बारामुल्ला से लेकर खीर भवानी की तरफ घाटी के गांव कस्बों की अपनी प्रॉपर्टी, घर दुकानों से कब्जा हटवाने, अदालतों में दावे ठोकने, सरकार से लैंड एक्ट बदलवाने के काम कराने चाहिए। 1990 के बाद की जोर जबरदस्ती की रजिस्ट्रियों, कब्जों को कैंसिल करवाने का आंदोलन करना चाहिए। कानून बनवाना चाहिए कि हिंदू की प्रॉपर्टी सिर्फ हिंदू को ट्रांसफर होगी। ये हर तरीका और हर उपाय ढूंढना चाहिए जिससे 1990 से पहले की तरह साथ साथ रहने का माहौल बने, मजबूरी बने। घाटी का जीवन वापस सेक्युलर भारत का सेक्युलर आदर्श बने। देश के मुसलमान और हिंदू तब दोनों में विश्वास लौटेगा कि घाटी में जब वापस पुराने दिन लौट रहे हैं तो हम भी समझना चाहिए। दुनिया में हर तरफ लोगों का नस्ल, धर्म के अपने अपने घेटों में जीने का सत्य है। अमेरिका से लेकर खाड़ी देशों, दक्षिण अफ्रीका, सभी तरफ मुसलमान, हिंदू, जूइश, चाइनीज घेटों में मजे की जिंदगी जीते मिलेंगे। बट इवन आफ्टर धारा 370 खत्म होने, पोस्ट कश्मीर फाइल्स के बाद भी पंडित घाटी में लौटने को तैयार नहीं है, और जो वहां वह भी श्रीनगर में रहने को तैयार नहीं है। मगर हाँ, दुनिया में हल्ला जरूर बन रहा है कि देखो देखो हमारे साथ क्या हुआ और अभी भी क्या हो रहा है। वे देश दुनिया को दिखला दे रहे हैं, and as such have been astute in propelling their narrative from the safety and luxury of their living rooms from New Delhi to New Jersey. Yes, post Kashmir files ने पंडितों के narrative को ताकत दी थी, gave them a new defining voice. However, to be quite honest, बाद में it started to become quite monotonous and insipid. Yes, undeniably, the movie helped in enlightening a vast majority of country's ignorance. They got to know, for the first time it seemed, what they never knew of the pain,
suffering and the horror that was faced by the Kashmiri Pandits. फिर फिल्म के बाद पिछले 1 साल में कश्मीरी पंडित की आवाज क्या बनी? To me, their voice and narrative now seem spiritless and weary. वे sufferer रहे हैं, लेकिन they themselves have snapped the victim and dismembered the hood out of the victimhood. The trust, the resoluteness has waned. And why do I say so? इसलिए कि पंडितों का ही तो बीजेपी का एजेंडा रहा है. BJP had been a firm supporter for the Pandits. The new government of Modi Shah particularly had lamented strongly and boldly that with the abrogation of Article 370, the Pandits will be able to return to their homeland. Even Manoj Sinha, in his early days of governorship, had kept the matter, the concern, very close to his heart, and rehabilitation of the Pandits was a priority in his list. मगर अब मुझे लगता है कि the priority has shifted and administration mood towards the community has changed. The central leadership and Up-Rajyapal too have become indignant to the community. And it happened particularly in the aftermath of Rahul Bhatt's death. And the reason is simple. You see, I feel, which I think even the leadership has understood, the problem with Kashmir lies more with the people who are sitting outside Kashmir. And in the case of Pandits, this holds all ground. Majority of the Pandits who had moved out of Kashmir in the 90s due to the terrorizing circumstances have found and made a good and comfortable life for themselves in major cities of India and abroad. ये reality है कि पंडितों में बहुत लोग बहुत सफल हैं, दुनिया में कई जगह अच्छी पोजीशन में हैं, रिसोर्सफुल हैं. तभी मेरा मानना है कि यदि पंडित कम्युनिटी के 8-10 बड़े लोग ठान कर पैसा इकट्ठा करें तो घाटी के लावारिस पड़े मंदिरों की वॉल बाउंड्रीज कम से कम बनवा ही सकते हैं. मुंबई की फिल्मी दुनिया में नामी पंडित कम नहीं हैं. The Pandits who were once the masterful, holding the political whip of the country, have in today's time stirred into corporate and entertainment sectors. They firmly believe their thrust and thirst for education, their willpower allowed them to gain a good education and the raw materials for building a comfortable life, which they could have never dreamt or dared to have in Kashmir. तभी ये घाटी लौटने और श्रीनगर में अपने फार्म हाउस बनाने की नहीं सोचते. घाटी को कैसे वापस बसाया जाए, इसकी कोई कल्पना, रोड मैप कम्युनिटी लेवल पर नहीं है, मगर स्याप्पा हर तरह का करते मिलते हैं. And I get it. Why would they want to leave the safety net and move back to the valley? Why would they consider rehabilitation when all it means and implies is about living in ghettos? तब इनका contribution क्या हो रहा है? Well, it have become about peddling a narrative from the dens of their cozy drawing rooms, lamenting the governor and the same government to help their narrative through a film like Kashmir File. Tabhi, the Pandit seems to have lost the plot now. And it is sad, very unfortunate. Their grievance is legitimate, but their intentions now are unlikewise, and their demands inane. How can the government provide security to every Pandit or Hindu that now lives in the valley? Many Hindus and the Pandits who continue to live in the valley despite the terrorizing challenges never had security. They never got government jobs, free ration or pani, yet they thrived. Their homes are not in ghettos. For their willpower, the courage got them staying. As such, the cry of the Pandits for their homeland, but not having the courage or the will to visit that homeland, even for few days, even for that closure, tells it all. You won't believe, but there are many Pandits who have not been to the valley ever since their elderlies left. And their own kids and grandkids are being made to live in ignorance. You'll be amazed to know that I had met a Kashmiri Pandit journalist who has not told her children about Kashmir, its bloody history that had targeted them. Rather, very proudly she had said that her kids got to know about their story from Kashmir Files. Imagine the state of affairs of their own plight on which they have been lately doing a lot of politics. And then there is the division. कहते हैं मनोज सिन्हा अपने पहले साल पंडितों के संगठनों से मिलकर हैरान थे. Manoj Sinha in his first year had been flabbergasted to meet the various Pandit communities in a span of just 1 month. He had said then
दैट एक पंडित ग्रुप जाति नहीं कि दूसरे की मिलने की रिक्वेस्ट आ जाती है और सबके अपने मोटिव्स होते हैं। पंडित्स भी डिवाइडेड हैं मुस्लिम्स की तरह, which is why I call Manoj Sinha more of Kashmiri politician than any other, because he has understood the lay of the land, its people, and truly their intentions. And it's the same with the Muslims. Their call for Kashmir Azadi comes from Pakistan. The call for retribution comes from the Muslims sitting on an Indian passport in New York. The while, the lot, the propaganda machine of both communities are coming from the outside. And adding more fuel to this fire is the media. In the olden times, there was a certain section of media which helped in fueling and propelling the Abdullah narrative in drawing rooms of India and the power corridors of Delhi. Today, the new India के new breed journalists who have become toolkit journalists are doing it in their own way. And in all this, as I've said before, and I say it again, Kashmir reels in the vortex of fear and uncertainty. Kashmir has become the peddler of uncertainty, irrespective of what anyone says. And everyone, and I mean everyone, the Muslims including, the government officials and the Gupkar gang even, they all live in uncertainty there. Fear is perpetual. And these are the hard-hitting facts. Pandits will not and never return to the valley. They never wanted to. They should therefore be content now that everybody knows what was not known. They should stop with the politics and help in supporting and keeping the small community that continues to live there to burn the diya of their community alive in the Kashmir Valley. For really, the remaining Hindus and Pandits, well, honestly, they are the last of their generation. All the kids and their kids are finding a suitable life outside the valley. This also includes many and many Muslim families too. The elites, the learned, the intellects, the one who can afford and has the sensibility have all left and will continue to leave. और रही बात घाटी में रहे मुसलमानों की, तो उनकी सोच को बदलने का काम बारीकी से होना चाहिए, इमामों, मदरसों के जरिए होना चाहिए. A lot of counseling is needed. Literally, psychological warfare needs to be charged upon for that idea of Pakistan to leave. दिल दिमाग में पाकिस्तान की जो छाप है उससे उन्हें बाहर निकालना होगा, क्योंकि इवन दो पाकिस्तान डूब जाए ग्लोबल वार्मिंग में, बट द आइडिया ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द माइंड्स ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स नहीं डूबेगा. कुल मिलाकर पंडितों, हिंदुओं में घाटी में लौटने का कॉन्फिडेंस नहीं के बराबर है. और इस मामले में माई बाप क्या कर सकती है, तभी मैं अपना इस आइडिया को दोहरा दे रही हूं कि नया श्रीनगर बनाया जाए. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर लिसनिंग. Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.